Don't you think that criminal defamation is not a reasonable restriction, it is an excessive restriction on the rights given under Article 19 Clause 1? ये क्वेश्चन पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट। Now, initially Supreme Court के जो initial reactions थे, that Supreme Court considered defamation as an exception. Main right क्या है? Main right is Article 19 Clause 1, speech, freedom of speech, and defamation they considered as an exception. That means उनका ये कहना था कि this right is important than this. Main right is exception मान के तो 91 में सारे rights मिले, बाकी restrictions. But recently, after 2016, Supreme Court has evolved its approach. Now, what Supreme Court says कि ये तो Article 19 Clause 1 ये तो है, it is a fundamental right. And Supreme Court says कि we don't have to consider this as an exception. Supreme Court ने कहा कि fame of any individual is part of life of any individual, and right to life is protected under Article 20. और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 1978 मेनका गांधी के सुप्रीम कोर्ट सेड दैट राइट टू लाइफ डज नॉट मीन कि बस आप जिंदा है बस और सांस लेने, इट मींस लाइफ ऑफ डिग्निटी, एंड लाइफ ऑफ डिग्निटी मींस दैट यू हैव योर फेम इन दैट, जो भी एक पूरे लाइफ का आपका आप यू मेंटेन दैट ट्रैक। जैसे व्हेन वी हियर अबाउट ऑफिसर्स लाइक अजीत दोवल, व्हेन वी हियर लाइक ऑफिसर्स लाइक टीएन सेशन, तो उन्होंने पूरे करियर में वो नाम बनाया है, इजंट इट? एंड दैट्स व्हाई इट इज पार्ट ऑफ देयर लाइफ। द कोर्ट सेड दैट्स व्हाई defamation should not be considered as a restriction or exception, rather it should be interpreted as Article 20. That means if you are defaming anybody, you are actually violating his right to life under Article 20, and therefore court has said ये दोनों fundamental rights बराबर है। No one is, इसमें कहा गया था कि this is more important, this is less important. Now the approach of the court is fame is also important, your freedom of speech and expression is also important, and therefore defamation को unconstitutional तो नहीं बोल सकते, defamation को excessive restriction नहीं, it is very much reasonable restriction, it is very much reasonable restriction. So in a way if we see, then the regime of defamation has strengthened over time. Why it has strengthened? Because Supreme Court ने fame को right to life से connect कर दिया है, and instead of looking at it in the way of 19(1) versus 19(2), now the Supreme Court is looking in the way 19 Clause 1 versus Article 21, and these both are fundamental rights, both are defamation. That's right. Right. Article 19 Clause 2. Article 19 Clause 2 considers defamation as a reasonable restriction, Interestingly, the term defamation has not been described. Section 499 and Section 500 of IPC contained the definition and punishment for defamation in Bharatiya Nyaya Sanhita, in BNS. These provisions lie in Section 356. तो defamation का definition क्या है? Any action intending to harm the reputation of any person is defamation, और उसके लिए there can be maximum simple imprisonment for a term which may extend till 2 years. इसी दोनों को combine करके एक section में डाल दिया गया है in different clauses. Right? The main issue with respect to defamation is that it is difficult to calculate potential reputational loss. Right. This provision has been used as a weapon to suppress the freedom of speech and expression. Right, submitting what has been the opinion of the Supreme Court. Right. The Supreme Court's opinion has evolved on the question whether defamation is an excessive restriction. In fact, defamation के सामने criminal defamation is an excessive restriction on freedom of speech and expression.
speech and expression. Right, next paragraph. The Supreme Court has in R. Rajgopal, Supreme Court has in R. Rajgopal versus State of Tamil Nadu. So Supreme Court has in R. Rajgopal versus State of Tamil Nadu 1994 referred to the US Supreme Court verdict. The US Supreme Court verdict in New York Times versus Sullivan. New York Times versus Sullivan. 1964, which declared the actual malice principle to establish defamation. Right. Next paragraph. The Supreme Court, India के Supreme Court की बात हो रही है. The Supreme Court further stated that in case of public officials, defamation provision should be interpreted in further narrow manner. अब एक और केस देखो जो कि इंपॉर्टेंट है. सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. 2014. सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014. ये केस बेसिकली इट वाज रिलेटेड टू सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि बेसिकली जयललिता इज अ करप्ट लीडर एंड जयललिता फाइल्ड अ डिफेमेशन केस अगेंस्ट सुब्रमण्यम स्वामी. जो सुब्रमण्यम स्वामी ने पहले डिस्प्रपोर्शनेट एसेट का केस डाला था ऑन जयललिता. ठीक है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना ओपिनियन दिया जो मैंने बताया था कि दे कंपेयर्ड इट विद आर्टिकल 21. हाँ, तो जब लेकिन इन्होंने जो क्लेम किया था तो शी रिट्रैक्टेड कि भाई आप हमें डिफेम कर रहे हैं. तो उन्होंने डिफेमेशन केस फाइल किया था, इन्होंने डिस्प्रपोर्शनेट एसेट का केस फाइल किया. इनफैक्ट Subramaniam Swamy is also the person who brought Jayalalitha and Sonia Gandhi together against Atal Bihari Vajpayee in 1998, the very famous Tea Party. ठीक है, होटल अशोका में जो हुआ था, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी एक वोट से. और आगे चल के सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी और जयललिता दोनों पे केस किया. ठीक है, जयललिता जी पे किया फॉर डिस्प्रपोर्शनेट एसेट और सोनिया गांधी का तो नेशनल हेराल्ड वाला भी चल रहा है. तो सुब्रमण्यम स्वामी थोड़ा डेंजर इंसान है. ठीक है, तो अब एंड ऐसा कहा जाता है कि द रीजन व्हाई जयललिता पुल्ड आउट ऑफ वाजपेयी गवर्नमेंट बिकॉज़ शी वांटेड सुब्रमण्यम स्वामी टू बी मेड द फाइनेंस मिनिस्टर. ठीक है, इन पॉलिटिक्स हैज इट्स ओन फ्लेवर्स, इंडियन पॉलिटिक्स खास करके. एनीवे, इन दिस केस ये ईयर है 2014, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014. In this case, the Supreme Court looked into the constitutionality of defamation provision. The court held that defamation is not an excessive restriction. Under Article 19, Clause 2, society is a collection of individuals, and what affects individuals also affects the society. The court connected fame with right to life under Article 21 and concluded that right to reputation is no less than right to freedom of speech. Thereby upholding the provision of defamation. नहीं, सिविल भी होता है और इसका कोई डेफिनेशन नहीं है. हमने देखा ना सेक्शन 499 और 500 में
इसका कोई पर्टिकुलर ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि इफ यू सी यहाँ पे हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट देखा था तो वहाँ पे डेफिनेशन था, हियर देयर इज नो डेफिनेशन एज सच, इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द जजेस। आमतौर पे मतलब इट विल डिपेंड इन डिग्रीज, ओके, कि किस लेवल का है, एंड इस पे जो जज होगा इनिशियली डिसाइड करता है हाई कोर्ट में, ही विल डिसाइड द नेचर ऑफ इट, ठीक है। और इसका मतलब जिसको कहते हैं टॉर्ट लॉ, कि जो पहले से जो जुडिशियल जजमेंट्स आए उसके बेसिस पे, प्रेसिडेंस के बेसिस पे होता है, नथिंग लाइक दैट। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस व्हाट हैपेंस इज कि पीपल विथड्रॉ देयर स्टेटमेंट और फिर या फिर अपॉलजी सीख हो जाती है। बहुत कम केसेस में आप देखेंगे कि ये क्रिमिनल है, बट कैसे क्रिमिनल डिसाइड होगा इज 100% अप टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द जज। राइट, इश्यूज रिलेटेड टू आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, issues related to rights to information। कब आया था आरटीआई? 20 साल पूरे हुए थे, मतलब मेंस क्वेश्चन आई डोंट थिंक आरटीआई उस बार आया, नेक्स्ट ईयर साला क्या पूछता जाता है, पूछना होगा तो 2025 में, जबरदस्त। We are connecting RTI with Article 19 because your expression is apt only when you have right kind of information। और कहीं ना कहीं यदि आपको right kind of information नहीं मिल रही है, then you will not be able to express, and therefore your freedom of speech and expression shall be impacted। Now, when RTI came, it was legislated, the RTI Act। It was called as the Sunshine Legislation of India because it is putting light on those informations which were not in the public domain till now। इस एक्ट से पहले आप समझो कि only that information is coming to you जो कि suo motu publicly उसको डिस्क्लोज किया गया है, जो उनकी वेबसाइट पे किसी डिपार्टमेंट का,